back in your previous class. So, in today's class, ma'am is going to tell you a story. And after that story, I will let you know that what is today's topic, what we are going to learn today. So, you all are ready? So, let's get started. Once upon a time, there was a girl. Her name was Sonia. She always wants to go outside to play. उसे बाहर रहना बहुत अच्छा लगता था. वो हमेशा बाहर खेलती रहती थी. वो सोचती थी कि लोग घर क्यों बनाते हैं, जबकि बाहर तो बहुत मज़ा आता है. हम बाहर कितना ज़्यादा खेल सकते हैं. और हमेशा उसकी माँ उसे ले जाने जाती थी. हमेशा उसको बोलते थे कि आप अपने घर पर आ जाओ. बट वो खेलने के बाद भी बाहर ही रहना पसंद करती थी. फिर उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर खेलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें टाइम से घर वापस भी आ जाना चाहिए. घर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. It's very important to come back to your home after playing. But she didn't listen to her. उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई. एक दिन वो रास्ते पर जा रही होती है और जाते जाते वो सोचती है कि जानवरों को कितना मज़ा है. वो तो बाहर ही रहते हैं, उन्हें तो किसी घर की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो वो सोचते सोचते एक जंगल में पहुंच जाती है और वहाँ वो बहुत से जानवरों को देखती है. और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जंगल में कौन से जानवर रहते हैं? Who lives in jungle? Very good. Wild animals. She saw many wild animals there. First, she saw a lion in his den. वो लायन को डेन में देखती है. एंड अदर एनिमल ऑल्सो, लाइक monkey is on a tree and frog, fish which lives in water. She also saw a beehive, the home of bees. Then she saw a rabbit in a burrow. Birds who lives in nest. She also see cute little ants who lives in anthill. They are so small but they also need home. She wondered. उसे बहुत हैरानी होती है इन सब का घर देखकर. और वो सोचती है जंगली जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है. तो वो डरने लग जाती है और वो अपने घर के लिए भाग जाती है वहाँ से. तो जैसे ही वो अपने घर जा रही होती है, उसे वहाँ एक फार्म दिखता है. तो वो उस फार्म में चली जाती है. और देन शी saw so many animals there within their homes. Like she saw cow lives in shed, sheep in pen, horse in stable. She also saw a dog in his kennel, and she also saw hen which is in her coop. अब वो अपने घर वापस आ जाती है. When she see her mom, she became very happy. वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है. Then she tell everything about the animals and their homes. Then ask her mother, Mama, I see animals, I see different animals and their homes. But why everybody need home? I want to know everything about homes of animals. Then her mother told her all animals need a home to live in. हर एनिमल को रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, होम की ज़रूरत होती है. They need
home to protect themselves from heat, cold, rain, and from other animals also. And there are two types of animals' home. First is natural homes and the second one is man-made homes. Natural homes वो होते हैं that occurs naturally or made by animals for themselves, जो animals खुद बनाते हैं या कुदरत उन्हें बनाती है, like lion's den, trees for monkey and beehive for bee. These all are called natural homes. And man-made homes are those homes that made by man for animals. Like in farm, you see na, we have kennel for dogs, shed for cows, sty for pigs, etc. There are so many homes that animals have. Then Sonia finally understands the importance of homes, and then she promised her mother कि मैं खेलने के बाद हमेशा अपने घर वापस आ जाऊंगी. She thanked her mother for everything. So, my dear kids, hope you like this story and understand today's topic, homes of animals. Now, can you tell me that which animal lives in a kennel? Yes, it's a dog. Very good, kids. That's all for today, kids. We will meet in our next class. Till then, bye-bye and take care.